So welcome to the last chapter of the class 8th geography ncert book. So let's start. Human resource. The chapter name is human resources. People are a nation's greatest resource. Nature's bounty becomes significant only when people find it useful. It is people with their demands and abilities that turn them into resources. Hence, human resource is the ultimate resource. Healthy, educated and motivated people develop resources as per their requirements. Human resources, like other resources, are not equally distributed over the world. They differ in their educational levels, age, sex, etc. Their numbers and characteristics also keep changing. Do you know Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana was started in 2015? तो ये कब स्टार्ट हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट है. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो स्टार्ट हुआ था 2015 में स्टार्ट हुआ है, एमिंग टू train 1 crore Indian youth from 2016 to 2020. The objective of this scheme is to encourage aptitude towards employable skills by giving quality training to probable and existing wage earners. तो इसका जो ड्यूरेशन है, मतलब जो योजना थी 2016 से 2020 का, ये तो कंप्लीट हो गया है. अब देखना पड़ेगा इसका अचीवमेंट रेट क्या है, तो मेरे को नहीं पता. अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. सो द वे इन व्हिच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस. हमने पहले भी देखा इसको, इस स्टेटमेंट को. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन. सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड एंड सम आर स्पार्सली पॉपुलेटेड. The crowded areas are South and Southeast Asia, Europe and Northeastern North America. Very few people live in high latitude areas, tropical deserts, high mountains and areas of equatorial forest. So many more people live in north of the equator than south of the equator. Okay, so more people live in north of the equator than the south of the equator. ये important है. Almost 3/4 of the world's people live in two continents, Asia and Africa. Almost 3/4, ठीक है, 3/4 of the world's people live in two continents, that is Asia and Africa. 60% of the world's people stay in just 10 countries. ये देखो भाई कितनी फैक्ट्स तरीके इंपॉर्टेंट वाली, मतलब मज़ेदार. Then 60% of the world's people stay in just 10 countries. All of them have more than 100 million people. So what are those 10 countries? नहीं, ये जापान, रशियन फेडरेशन, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, यूएसए, इंडिया एंड चाइना. तो हमने जो है कम पॉपुलेशन से ज़्यादा पॉपुलेशन में आया, तो चाइना अभी तो फ़िलहाल इंडिया फर्स्ट रैंक पर है. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा पॉपुलेशन पैटर्न क्या है उसके बारे में, कि हम जो पीपल जो है वर्ल्ड का वो जैसे लिव करता है, जैसे सेटलमेंट बनाता है, स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस. ओके, द वे इट स्प्रेड्स इज कॉल्ड द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. राइट, देन ये हो गया. अब देखो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसका कॉन्सेप्ट हमको लेना पड़ेगा. तो डू यू नो एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किमी. एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. राइट, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन यूनिट एरिया ऑन द अर्थ सरफेस. इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर. द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51 पर्सन्स पर स्क्वायर किमी. साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाइस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया. Right, the average density of population in the whole world is 51% per square kilometer. whole world में वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या है ना 51%. ठीक है, इंडिया है 382 परसेंट पर स्क्वायर किमी. और ये जो है एवरेज डेंसिटी ऑन द वर्ल्ड पर्सपेक्टिव ओनली 51% पर स्क्वायर किमी. देन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. पहले आते हैं जियोग्राफिकल फैक्टर्स. टोपोग्राफी. पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन्स रादर दैन माउंटेन्स एंड प्लेटोज बिकॉज दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज. द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, व्हाइल माउंटेन्स लाइक एंडीज, आल्प्स एंड हिमालयज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड. क्लाइमेट. न पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर very hot or very cold like Sahara Desert, polar regions of Russia, Canada and Antarctica. Soil. Fertile soils provide suitable land for agriculture. Fertile plains such as Ganga and Brahmaputra in India, Huangho, then Changjiang in China and the Nile in Egypt are densely populated. Water. People prefer to live in the areas where fresh water is easily available. डेफिनेटली मिनरल्स जहाँ होगा, देन सोशल कल्चर इकोनॉमिक फैक्टर जहाँ होगा कि सोशल कल्चर अच्छे होंगे, जैसे कि एरिया जो बेटर हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड लाइक पुणे और भी एग्जांपल्स है. देन कल्चरल फैक्टर जहाँ अच्छे होंगे, जैसे प्लेसेस विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल. तो वाराणसी, जेरूसलम, वेटिकन सिटी आर सम एग्जांपल्स. इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल एरियाज, डेवलप्ड रीजन्स हैव मोर पॉपुलेशन डेफिनेटली. देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी
क्या है ना, इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव. एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव, नॉट इंडिविजुअल. एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव. So life expectancy is average measure, right? ऐसा ही तो लग रहा है. It is the number of years that an average person, not individual person, can expect to live. Then population change. The population change refers to change in the number of people during a specific time. The world population has not been stable. It has increased manifold as seen in the figure 5.3. Why? This is actually due to the changes in the number of births and deaths. For an extremely long period of human history until the 1800s, the world's population grew steadily but slowly. Large numbers of babies were born, but they died early too. This was as there were no proper health facilities. Sufficient food was not available for all the people. Farmers were not able to produce enough to meet the food requirements of all the people. As a result, the total increase in population was very low. In 1804, the world's population reached 1 billion. ठीक है, तो 1 बिलियन कब हुआ था? 1804 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन 1 बिलियन हुआ था. 155 years later, 155 years later, in 1959, the world's population reached 3 billion. This is often called population explosion. This is often called population explosion. तो population explosion कब से start हुआ था? 1959 से. In 1999, 40 years later, the population doubled to 6 billion. The main reason for this growth was that with better food supplies and medicine, deaths were reducing while the number of births still remained fairly high. Births are usually measured using the birth rate, that is the number of live births per 1000 people. Deaths are usually measured using the death rate, the number of deaths per 1000 people. And migrations is the movement of people in and out of an area. Births and deaths are the natural causes of population change. ठीक है, births and deaths जो ये natural causes of population change है. And the difference between the birth rate and the death rate of a country is called the natural growth rate. The population increase in the world is mainly due to rapid increase in natural growth rate. तो ये सब के बारे में हमको और भी डिटेल में पढ़ना है पॉपुलेशन ज्योग्राफी में. माइग्रेशन इज अनदर वे बाय व्हिच पॉपुलेशन साइज चेंजेस. पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज. ओके, सो इमिग्रेंट्स आर पीपल हु लिव इन अ कंट्री फॉर एग्जिट. ऐसे करके याद रख सकते हो कि हम एग्जिट ले लिया तो हम इमिग्रेंट बन गए. देन इमिग्रेंट मतलब इन, ओके, आई फॉर इन. देन इमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव इन अ कंट्री. ओके, देन आपका कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर्स बाय इन माइग्रेशन और immigration, and Sudan is an example of a country that has experienced a loss of in population members due to out migration or emigration. The general trend of international migrations is from the less developed nations to the more developed nations in search of better employment opportunities. Within countries, large number of people may move from the rural to urban areas in search of employment, education and health facilities. Then pattern of population change. The rates of population growth may vary across the world. Although the world's total population is rising rapidly, not all countries are experiencing this growth. Some countries like Kenya have high population growth rates. They had both high birth rates and death rates. Now, with improving healthcare, death rates have fallen, but birth rates still remain high, leading to high growth rates. In other countries like United Kingdom, population growth is slowing because of both low death rate and birth rates. Right, then एनुअल रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज जो है ये दिखाया गया है मैप के थ्रू कि वर्ल्ड डिफरिंग रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ दिखाया गया है. वेरी हाई कहाँ पर है? जहाँ पर नील ब्लू कलर है वहाँ पक्का पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे हाई है, वेरी हाई है. देन पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात करेंगे. दी हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज हैज लिटिल टू डू विथ इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. फॉर एग्जांपल बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, बट जापान इज फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड दैन बांग्लादेश. वाओ, सो ये एक अच्छी बात बोल दी कि देखो डेवलप्ड होगा कंट्री, डेवलप्ड होगा या अंडर डेवलप्ड होगा, ये पॉपुलेशन डेंसिटी पे तो डिपेंड नहीं करते, क्योंकि जापान भी बहुत ही हाईली डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, और बांग्लादेश का भी है, बट जापान इज developed country. To understand the role of people as a resource, we need to know more about their qualities. Okay, so people vary greatly in their age, sex, literacy level, health condition, occupation and income level. It is essential to understand these characteristics of the people. Population composition refers to the structure of the population. ठीक है, the composition of population helps us to know how many are males and or females, which age group they belong to, how educated they are and what type of occupations they are employed in, what their income levels and health conditions are. An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid, is also called as age sex pyramid.
Then a population pyramid shows the total population divided into various age groups. Example 5 to 9 years, 10 to 14 years. The percentage of the total population subdivided into males and females in each of these groups. Okay, तो पहले ग्रुप बनाया जाता है एज के अकॉर्डिंग, देन उसको हम मेल फीमेल में रिप्रेजेंट करते हैं. उस ग्रुप में भी कितना मेल है कितना फीमेल है वो हम पिरामिड के आकार में रिप्रेजेंट करते हैं. उसे हम पॉपुलेशन पिरामिड या एज सेक्स पिरामिड कहते हैं. द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. राइट, द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 15 ईयर्स आर शोन एट द बॉटम. तो चिल्ड्रन जो है वो बटम में रहता है 15 ईयर्स बिलो. देन आई रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ्स. ओके, द साइज ऑफ द टॉप शोज द नंबर्स ऑफ एज्ड पीपल दैट इज अबव 65 ईयर्स एंड रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ डेथ्स. द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल्स अस हाउ मेनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन ए कंट्री. हाउ मेनी डिपेंडेंट्स आर देयर इन ए कंट्री. जो भी बच्चे होंगे एंड बूढ़े होंगे वो तो सब डिपेंडेंट होंगे ना. तो वो जो 60 के ऊपर होंगे अबव 60 होंगे, 64 के होंगे अबव 64, तो वो भी काम नहीं कर सकते और जो बच्चे होंगे वो भी काम नहीं करेगा. दो जब द चाइल्ड लेबर अलग बात है और करते नहीं ये भी अलग बात है, बट थ्योरेटिकली ऐसा है कि हम मानते हैं कि वो लोग काम नहीं करेगा तो वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होगा. किसके ऊपर? कि जो 15 से अबव होगा जो वर्किंग पॉपुलेशन है, यानी 15 to 64 अबव 15 to 64 होगा. ठीक है, अबव 15 मतलब 15 to 64, बिलो 15 হচ্ছে चिल्ड्रेन. द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री इन व्हिच बर्थ एंड डेथ रेट्स both are high is broad at the base. The population pyramid of a country in which birth and death rates are both high, the pyramid base of the population is broad. Population pyramid is broad and rapidly narrows toward the top. This is because although many children are born, a large percentage of them die in their infancy. Relatively few become adults and there are very few old people. This situation is typified by the pyramid shown for Kenya. तो बेसिकली ये लो डेवलप्ड कंट्रीज की कैरेक्टरिस्टिक्स है जिस जहाँ का बेस जो है पिरामिड का वो बहुत बड़ा होता है और ये रैपिडली जो है इस पॉपुलेशन पिरामिड जो है इसका नैरो होते जाता है. ठीक है, मतलब बहुत ही स्टीप हो जाता है. Then in countries where death rates especially amongst the very young are decreasing, the pyramid is broad in the younger age groups because more infants survive to adulthood. This can be seen in the pyramid for India. Such populations contain a relatively large number of young people and which means a strong and expanding labor force. In countries where death rates are decreasing, right? So the pyramid is broad in the younger age groups because more infants survive to adulthood. This can be seen in the pyramid for India. Such populations contain a relatively large number of young people and which means a strong and expanding labor force. In countries like Japan, low birth rates make the pyramid narrow at the base. Decreased death rates allow numbers of people to reach old age. So skilled, spirited and hopeful young people endowed with a positive outlook are the future of any nation. We in India are fortunate to have such a resource. They must be educated and provided skills and opportunities to become able and productive. ओके, तो इसका जो है स्पेसिफिक नाम है जैसे कि रिग्रेसिव पॉपुलेशन पिरामिड, प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन पिरामिड, कॉन्स्ट्रक्टिव पॉपुलेशन पिरामिड. तो ये सारे के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है जो कि हमको पॉपुलेशन जियोग्राफी में मिल जाएगा या फिर 11-12 की बुक में तो ज़रूर होगा. तो हम चलिए आगे जाकर देखते हैं. तो ये होती है आपका इस चैप्टर की एंड और इसी के साथ हमारा क्लास 8 का जो जियोग्राफी था टेक्स्ट बुक ऑफ ncert रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के नाम पे वो ख़त्म हो गया है. तो चलिए इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं और आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा. थैंक यू फ्रेंड्स.